Please write these things with me, then I will explain it. Is that for substances undergoing association or dissociation in solution, the molar mass determined by the molar mass determined by qualitative property is different from the actual value. From the actual value of what? From the actual value of the molar mass. This experimentally determined molar mass is known as abnormal molar mass. All of you wrote the page officially. सबने देख लिया ना यहाँ तक? अमरनाथ, मरीन लोहानी, ताहा. Yes, ठीक sir. है. Let us understand why this happens. Why the experimentally determined molar mass is abnormal molar mass when the substance is undergoing association or dissociation. ठीक है, ध्यान से देखिए. For example, in the previous cases we have told that we use the qualitative property in order to calculate or in order to determine the molar masses. In each qualitative properties, we have also written an expression that gives you the molar mass, right? So, for example, I have further delta TB, it is equal to KB into WB into 1000 divided by MB into WB, right? So from this formula, we can rearrange things. We can shift the MB here and we can shift the delta TB this side, right? And we can get the molar mass. Now, this molar mass of the solute can be calculated. So, what experiment we need to do? Experimentally, we need to determine delta TB. What is delta TB? The elevation in boiling point. So, what is the difference in the boiling point of the solvent versus the solution? Whatever the difference is between the boiling point of solvent and solution, that will be delta TB. वो आपको experimentally निकालना पड़ेगा. And other values are going to be what? Other values are going to be theoretical तो नहीं बोलेगी. Other values are going to be always be there. For example, kb of water आपको पता होगा. But the amount of solute that you are taking वो भी आपको पता होगा. The amount of solvent you are taking that वो भी आप ले रहे हैं. So you will know what the amount of solvent is there. 1000 is just a number. 1000 is just a number. Okay. So from here, we can determine the molar mass of a particular solution using one of the qualitative properties. And similarly, we can determine the molar mass with different qualitative properties. अब यहाँ पे देखते हैं ये delta TB में यानी कि this delta TB will be having some abnormality और उसकी वजह से will be having abnormality in the molar mass also. ठीक है? What abnormality will come here in the qualitative property? उसको देखते हैं. एक और चीज यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा. Like delta TB हो सकता है, molar mass हो सकता है. So I can say that delta TB it is inversely proportional to molar mass. Or for each and every qualitative property, it is inversely proportional to the molar mass. If the molar mass is inversely proportional to qualitative property, just like they are inversely related.
ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन पे कि हाउ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल नॉट बी नॉर्मल. ठीक है, लेट्स सपोज वी हैव NaCl, है ना, एंड कितना आपने लिया, लेट अस सपोज यू हैव टेकन 1 मोलर. ठीक है, 1 मोल पर केजी. डोंट राइट दिस ना, डोंट राइट दिस, 1 मोल पर केजी. ठीक है, तो दिस इसकी मोलालिटी क्या है, मोलालिटी इज इक्वल टू 1, मोलालिटी इज 1. बट जैसे ही आपने NaCl को सोल्यूशन के अंदर डाला, जैसे डाला, you got Na positive and you got Cl negative, right? You got Cl negative. Now please understand, if I have one NaCl, I will get one Na plus one Cl negative. If I have 1 mole of NaCl, I will get 1 mole of Na positive, 1 mole of Cl negative, right? The amount of solvent, it is still the same. Solvent उतना ही है, ठीक है, water उतना ही है. I took 1 mole of NaCl, that is why the molality was what? 1. But right now, if I calculate the moles of solute, तो ध्यान दीजिएगा, we have 1 mole of Na positive, we have 1 mole of Na positive, we have 1 mole of Cl negative. ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव, सो टोटल वी आर हैविंग 2 मोल्स. ठीक है, तो 1 मोल पर केजी था, दैट मींस वी हैड 1 मोल पर केजी, राइट. एक केजी सॉल्वेंट, वी आर नॉट चेंजिंग द सॉल्वेंट, प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट एडिंग एनी वाटर. NaCl is dissociating, so now the number of moles is 2 mole, now the molality will become how much, 2 moles per kg. Now what the difference is going to be there, please understand. This is what we are thinking. We have added how much? 1 moles per kg. We have added a molality that is equal to 1. So whatever delta Pb we will be expecting will be equal to Kb into 1. But actually the solution is experiencing 2 moles per kg. Solutions experience. ठीक है, सोल्यूशन क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, 1 मोल Na पॉजिटिव और 1 मोल Ca नेगेटिव, बिकॉज इट हैज डिसोसिएटेड. So in reality, this is what we are thinking कि ऐसा होना चाहिए expectation. But in reality, the experiment में क्या हो रहा होगा, the delta TB that we will be getting will be equal to KB into 2. So what we thought as the delta TB was KB, we are getting double the value of that. Why? Because of dissociation. So what we are thinking and what the solution is experiencing because of dissociation are two different things. And because of this difference, there will be a abnormality in the colligative property, which will create an abnormality in the molar mass. Where the difference is coming is, please tell me, guys. Yes or no? Amarnath, Amna, Maryam, Taha. Taha, आपको समझ में आ रहा है? Where is Taha? Yes, sir. Okay. ये रोड in the chat, sir. Yeah. Sorry. Okay. So this is how the abnormality comes in the qualitative property. और further कहाँ चला जाता है? Further molar mass calculation में तो फिर extrapolate हो जाते हैं. Right? Now, because of this dissociation and association. अगर association भी होता ना, for example association का example हम लिखाएंगे, तब भी आपके पास तीन ही चीज आती है. ठीक है? So now this is like the factor by which we are having difference, उसी को बोलते हैं Van't of. For example, experiment करेंगे, expected KB आया कितना, 2 KB. By what factor difference, कितने फैक्टर का, 2 का, तो the Van't of factor will be 2 here. ठीक है, तो वही Van't of factor है, Van't of में इसका लेके जाते हैं, that's why it is called Van't of factor. पहले मिल गया है, we have just saw how to determine the Van't of factor looking at an electrolyte, but यहाँ पे आप देखिए Van't of factor, Van't of factor which is I. अब इसकी definition अगर लिखेंगे, right, it is the ratio of experimentally determined colligative property, calculated value
of colligative property for a solution. For a solution. ठीक है? Basically, I it is equal to colligative property that is experimental divided by colligative property that is calculated. है ना? And we have seen that colligative property it is inversely proportional to the molar mass of the solute. Because हम क्या लिख सकते हैं? I it is equal to molar mass of the solute that is calculated divided by molar mass of the solute that is experiment. तो जो कैलकुलेटेड वाला होता है वो होता है नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास, ठीक है। और जो एक्सपेरिमेंटल होता है वो होता है एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। नाउ अनदर थिंग इज, देखो नॉर्मल मोलर मास विल बी विदाउट दिस, नॉर्मल मोलर मास यहाँ पे है आपके पास और नीचे क्या एक्सपेरिमेंटल में एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। इसके लिए लिखिएगा आई इज इक्वल टू, अच्छा हाँ, सी द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में अगर आप देखें तो एक्सपेरिमेंटल वाला क्या हो गया एबनॉर्मल और कैलकुलेटेड वाला नॉर्मल। एक्सपेरिमेंटल में अगर देखें आप देन इट इज गोइंग टू बी व्हाट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, एसोसिएशन का भी केस वी आर गोइंग टू टेक डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इतना कॉपी कर लीजिए प्लीज। Please raise your hand once you're done. Tara, waiting for you. Tara, please write it fast. Raise your hand once you're done. You write next. Modification in equation of colligative property. ठीक है, बेसिकली colligative property अगर आपको एक्सपेरिमेंटली बताना है कितना आएगा, then what you need to do is you need to multiply the value factor I into the colligative property जो कि कैलकुलेशन से आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नंबर 1, relative lowering of vapor pressure RLVP, the formula is P naught A minus P total upon P naught A, which will be equal to I into IB. Second, elevation in boiling point, we have delta TB, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली कितना आएगा I into KB into M, I into KB into M, or we can also write this as I into KB into WB into 1000 divided by W MB into W, ऐसे लिख लेते हैं आप लोग के लिए, MB
into WA. Similarly, depression in freezing point delta PF, it is equal to I into KF into the molality, which we can write it as I into KF into WB into 1000 divided by MB into WA. ठीक है, और कर सकते हैं हम फोर्थ में लिख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पाई इट इज इक्वल टू I into CRT, right? So overall we can see that all the colligative properties, it is directly proportional to I. I अगर बड़ा होगा तो colligative property will also be larger, or it will be having a larger value. Please write this down, raise your hand once you're done. I is the Van Hoff factor, no? I is the Van Hoff factor. Please raise your hand once you're done. Sir, what was the full form of RLBP? What is the full form? Relative lowering of paper pressure. कितने दिन के बाद आ रही है आपकी सेवा? What's it? After how many days you are back to the class? Four classes. But I saw all the recordings except the last one. Sorry? I was not there for 4 classes, but I saw the recordings except the last one. Did you Last make class. notes? Did you make notes while watching the recording? Yeah. Okay, that's good. Please try to complete the recording. This is now a more difficult. Oral will be relative lowering of paper pressure. Just waiting on you, sir. Where is Taha? देखिए दोस्तों, प्रेजेंट इन लास्ट लेक्चर तो थोड़ा वहां पे तो हमने आई के बारे में बताया था, हाउ टू कैलकुलेट द आई. Looking at an electrolyte, we can determine the value of I. We'll do a few questions regarding this, and then we will move on. Determine the value of I. Number one, we have NaCl. But Batul abhi aa rahi hai itna late. So NaCl will dissociate into Na positive plus Cl negative. So I will be equal to number of ions, like number of species after dissociation is 1. Before dissociation it is 1. Sorry, after dissociation 2, before dissociation 1. So it is basically 2. Okay, लिखते जाइए जरा please. MgCl2, Mg2 plus 2Cl negative. I will be equal to Mg and 2Cl, total 3. And before it was 1, so only 3. 3 by 1 will be 3 only. K2SO4. Dissociate into 2K positive plus 1 SO4 2 negative. So total number of species that we are having, 2 potassium, 1 sulfate, that is totally equal to 3. Or for example, Al2SO4 whole thrice. This will dissociate into 2 aluminium 3 positive, aluminium 3 positive, plus there are 3 sulfate ions. SO4 2 negative, there are 3. The total number of ions or species after the dissociation, we have 2 aluminium, 3 sulfate, a total of 5. Initially we had only 1 aluminium sulfate. Or Taha, what happened? Where did you go? Taha? Yes, sir. Okay. Let's suppose we have CH3 COOH.
ठीक है, CH3COH. Now if you add this in water, acid in water, then it will dissociate into CH3COO negative plus H positive. Like if you have, this will be 2. After dissociation we have 2, before dissociation we have 1. So we are having 2. If you add the same thing, for example CH3 or any carboxylic acid, ठीक है, CH3COH in benzene, यहाँ पे एसोसिएशन हो जाता है. Two carboxylic acid they get associate, कैसे? CH3COH whole twice हो जाता है ये, ठीक है, in order to balance, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल यहाँ पे now they have associated होंगे, है ना, ऐसा नहीं कि नया हमने दो लिख दिया, दो नहीं लिखा, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 2 moles of CH3COH they are going to dimerize, ठीक है. So what is happening? I it is equal to, here we have only one species, before we had 2, so this will be equal to 0.5. Please copy this down. कहाँ आपको समझ आ रही है? What I have written. Yes, sir. बस ये लास्ट वाले का ख्याल रखिएगा और गाइस, ठीक है. मतलब ऐसे तो लिखा है एक सवाल में ना, मतलब काफी अच्छे से लिखा रहेगा कि डिसोसिएट हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, न्यूमेरिकल्स स्पेशली. बट अगर आपने पढ़ा एक सवाल एसिटिक एसिड इज डिसोसिएटिंग, अगले सवाल में आपको दिख रहा है एसिटिक एसिड इज एसोसिएट, तो कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई एसोसिएट करेगा डिसोसिएट करेगा. तो इन दैट केस वी हैव टू लुक एट द सॉल्वेंट. इफ वी हैव एसिटिक एसिड इन वाटर, then dissociation will take place. And if it is in benzene, majority of the times it will be benzene only. But there are basically water is a type of solvent which is polar. Benzene is non-polar solvent. So non-polar means it is going to dimerize and that is associate. And in polar solvents such as water, it is going to dissociate. Waiting for Amna, Mariam, and Taha. Raise your hand once you are done. वेटिंग फॉर आना है मरी मत पर तो टाइम क्या है करेगा आप फैमिली में लास्ट क्लास में ज्यादा टाइम चाहिएगा तो ये कर जस्ट वेटिंग फॉर मरियम बतून. ओके. So by the way, I have written acetic acid. This is true for any carboxylic acid, है ना. Examples में benzoic acid होगा. Sometimes we have fluoroacetic acid. So if you have acetic acid, then it is going to what? Dissociate in water, associate in benzene. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. Now write a few points in note. पहला पॉइंट आप नोट करके ये लिखिएगा, when I it is greater than 1, then dissociation occurs. I अगर एक से ज्यादा तो क्या शो करता है? Dissociation. Then dissociation occurs. When I it is less than 1, then association occurs. Association occurs. ठीक है. और नेक्स्ट में लिखेगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सॉरी ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स सच एज ग्लूकोज,
यूरिया ग्लाइसिन, यूरिया ग्लाइसिन हाइड्रोजीन etc. Don't associate or dissociate. Don't associate or dissociate. Therefore, their I it is equal to 1. सबको समझ में आ गया ना? I hope there is no more need of explanation. If you get these type of solutes, तब सवाल नहीं आना चाहिए कि सर I क्या लेंगे सर? I सर I will be 1. ठीक है? I will be 1 if you have solutes such as glucose, urea, glycine, hydrazine, etc. Okay. Now mostly we are taking you will get these things only. That's why I have written these. चलिए, moving on. सवाल which one of the following? No. So can you show the third note, please? Oh, yeah. Yes, sir. Which one of the following 0.1 molar aqueous solution will exhibit largest freezing point depression? Largest freezing point depression. So all of these are what having the same concentration. Yeah, concentration क्या है इसकी? All of these are having same concentration. So what is the formula? The formula is delta TF. It is equal to I into KF into M. So concentration तो अब देखिए molarity same है तो molarity भी same होगी. अगर 0.10 molarity है, then molarity will be something different. But all of these will be having same molarity, है ना? Because concentration is same basically. So this is the same. KF is also a constant. So we can say that delta TF will now only depend on what? I. Hydrazine, I it is equal to 1. Glucose, I it is equal to 1. Glycine, I it is equal to 1. KHSO4 negative, that is ionic, which will dissociate into K positive plus HSO4 negative. And here you can see that I it is equal to how much? 2. So if I is greater, it will be having a higher, largest freezing point depression. The depression in freezing point सबसे ज्यादा किसका होगा? KHSO4 negative का होगा. Does this make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. हाँ या ना बताएं. ठीक है? Yes. उसी तरह से एक और सवाल है. कॉपी करें तो कर लीजिए कॉपी. मतलब दिस वाज आस्क्ड इन मेंस है ना. ऐसा कुछ खास सवाल नहीं आता. तो मेंस में भी आसान सवाल आते हैं. देयर आर एटलीस्ट आप मान सकते हैं कि 40% क्वेश्चंस आर 40 क्या हम तो बोलेंगे 50% क्वेश्चंस आर इजी. ठीक है? अप्रोक्सीमेटली 30 एंड 20 फिर रहता है आपका मॉडरेट हार्ड और 40-10 मॉडरेट हार्ड और इट इज 25-25 मॉडरेट एंड हार्ड का सवाल रहता है. 50% तो आपको बेसिकली मतलब काफी आसान सवाल है. इसमें कुछ टाइम भी नहीं लगा. क्यों? नो द कंसेप्ट तो तुरंत आपको मिल जाएगा. हाँ, ऑब्वियसली ये चीज जरूर है दैट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ बैक इंफॉर्मेशन, है ना, कि आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ का कंफ्यूज हो सकता है बच्चा. बच्चा कंफ्यूज हो सकता है लाइक मोलारिटी दिया हुआ है लेकिन फॉर्मूले में तो सर मोलारिटी आता है. like the concept is
if the concentration is same, तो concentration चाहे molarity हो, चाहे mole fraction हो, चाहे molality हो, कुछ भी हो, if the concentration same बोला ना, तो सारे के सारे concentration terms उनके लिए same ही आए, ठीक है? ऑब्वियसली मोलैरिटी एंड मोलालिटी की वैल्यूज अलग होगी, बट सबके लिए हाइड्रोजन के लिए जो मोलालिटी होगी वही मोलालिटी, ग्लूकोज के लिए वही मोलालिटी, ग्लाइसिन एंड सेम मोलालिटी विल बी आल्सो फॉर KH4। ओके, तो ये फंडा एक हो गया। और उसके बाद नाउ दे शुड आल्सो नो दैट हाइड्रोजन, ग्लूकोज, ग्लाइसिन, ऑल ऑफ दीस आर ऑर्गेनिक सॉल्यूट, दैट इज व्हाई दे आर नॉट गोइंग टू डिसोसिएट। इफ दे आर नॉट गोइंग टू डिसोसिएट तो ISP1 होगी, है ना। KHSO4 नेगेटिव जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा, वो चीज में भी परेशान हो सकते हैं। SO4 तो 2 नेगेटिव होता है तो K प्लस H प्लस SO4 2 नेगेटिव ऐसे टूटेगा तो नहीं, ऐसे नहीं टूटेगा, ठीक ना। दीज पॉइंट्स आर देयर ऑब्वियसली, इसमें पुरानी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, अदरवाइज इट इज इजी। आई होप यू हैव कॉपीड दिस डाउन। हाँ गाइस, हो गया कॉपी? नहीं हुआ है कॉपी? जल्दी करो। Yes, sir. Yes, sir. मीटिंग पर अमरनाथ, हरी मधु, हरी मोहानी। Yes, Sara, please send it to me and let me know if you have any doubts in there, है ना? Yes, Sara. Try this question, guys. You'll have the highest qualified, so try कीजिए। Fill the answer in the Zoom chat 1, 2, 3, 4. Concentration same है तो वही I निकालना है आपको, you have to calculate the I, जिसका I ज्यादा होगा that will be having highest qualified. Yes, कहाँ पर फिर कहाँ? सवाल लिख लीजिए आप कहाँ पे ना, बाकी लोग आंसर करते पहले। नो अमरनाथ, डिसोसिएशन यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, देखो ना उसमें दिक्कत होगी बस, that's it. If you know how to dissociate then it is fine, otherwise दिक्कत होगी। देखिए हिम्मत करके आंसर तो भेजो आप लोग। में क्या हो रहा है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये समरी नहाने करेक्ट। आई कितना हो जाएगा इसका, 2 Na+4, 2 Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, आई कितना हो जाएगा इसके लिए, 3 NH4 NO3, NH4 पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, कितना हो जाएगा ये, I इज इक्वल टू 2 KNO3 K पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 2। तो सही आंसर कौन सा होगा, Na2SO, 2 पक्का
हाँ टू सही, मतलब लाइक टू पक्का, हाँ टू पक्का सही है। चलिए once you're done writing this question, आप एक अगला सवाल लिखेंगे। Determine the osmotic pressure of a solution prepared by dissolving 25 milligram of K2SO4 in 2 liter of water, 2 liter of water at 25 degrees Celsius. That is completely dissociated. Completely dissociated. ठीक है, देखिए कैसे होगा। तो बस हम हिंट दे देते हैं आपको, उसके बाद आपको खुद ही से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द सॉलिड वी आर हैविंग? वी आर हैविंग K2SO4, है ना? So we know that K2SO4 will dissociate into 2K positive plus SO4 2 negative। ठीक है, आप यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर पाएंगे, इट इज इक्वल टू I इंटू C इंटू RT, CRT, है ना? I कितना होगा बताइए? 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, है ना? कंसेंट्रेशन CRT के लिए क्या लिखते हैं? मास ऑफ सोल्यूट इनटू द कांस्टेंट पाई। अब देखिए एटीएम में निकालना है, किसमें निकालना है? इफ यू वांट टू कैलकुलेट इन एटीएम 0.082 लिखिएगा, द R मल्टीप्लाइड बाय 298, राइट? दैट इज द टेम्परेचर इन केल्विन व्हेन यू हैव 25 डिग्री सेल्सियस, सही है ना? एंड देन वी हैव मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम, ठीक है, एंड वॉल्यूम शुड बी इन लीटर्स। तो यहाँ पे आप बोलेंगे सर वॉल्यूम तो सॉल्यूट का चाहिए, बट वॉल्यूम वाटर का दिया है, तो प्लीज आल्सो सी इन 2 liter वी आर एडिंग 25 मिलीग्राम ओनली, बहुत कम है। when you add 25 milligram, that is not going to change the, so the volume of solution significantly। अगर significantly change नहीं करेगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। I will give you one more data, that is molar mass of K2SO4, which is equal to 174। ठीक है, this is equal to 174। Now you have all the data, plug in the values and see what answer you are getting। उसके बाद कैलकुलेशन बचा, आपका कुछ नहीं बचा है। डब्ल्यू बी और एमबी की जगह आप लगन कर दीजिए, 25 मिलीग्राम है, ध्यान रखिएगा। You have to get this in grams। Sir, या करेंगे। so we need to convert 25 milligram to grams, right? या करेंगे।
मेरी कैलकुलेट भाई, किसी का आंसर नहीं आ रहा था। चलिए, सी मत भूल जाइएगा, स्टार्ट करना पड़ेगा लगता है, इसका आंसर आएगा। हाँ, तो ठीक है, मतलब चलेगा, मतलब 3 into 25। हाँ, that is more accurate. 3 into 25 into 10 to the power minus 3 into 0.082 into 298 divided by molar mass कितना है 174 into volume in liters is how much 2। जितना आंसर आ रहा है इनका, ये देखिए हम आपको बता रहे कितना आएगा 5.27 into 10 to the power minus 3 ATM आएगा, ठीक है ना। दिस विल बी इन ATM because we have taken 0.082, so 0.082 liter ATM per Kelvin per mole, that is the value of the universal gas constant R। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए, आई विल गिव यू लॉट ऑफ क्वेश्चंस, है ना, बिकॉज क्वेश्चंस कीजिएगा आराम से हो जाएगा, बस आई की जगह आपको डालना पड़ेगी। यू हैव टू प्लग इन द वैल्यू ऑफ आई एंड दैट्स इट, बाकी सारी चीजें सेम है, सारा फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, कोई नया कंसेप्ट भी नहीं है, ठीक है। बस आई की वैल्यू आपको देखना है, K2SO4 है, MgCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड है, NaCl है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट, प्लग इन द वैल्यू ऑफ आई, बाकी कैलकुलेशंस एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम एज बिफोर। अब एक नया जो इसी में आगे आपका एक्सटेंशन है एब्नॉर्मल मोलर मास का, इसका इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीटली डिसोसिएटेड। Now there are some electrolytes which are weak and they do not dissociate completely, they are partially dissociated, उसके लिए सीखेंगे, ठीक है। तो प्लीज सी हियर गाइस, आराम से बस देखिएगा, कुछ लिखने की जरूरत आपको अभी नहीं है, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। लेट अस सपोज डोंट राइट एनीथिंग, है ना। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट देयर इज अ टर्म दैट इज नोन एज अल्फा, व्हिच मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लेट सपोज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 50%, ठीक है, और 0.5, बोथ ऑफ दीज आर गोइंग टू मीन द सेम, ठीक है। 50% मतलब अगर आपने 100 लिया तो उसमें से 50 डिसोसिएट करेगा, 50 डिसोसिएट करेगा। 0.5 मतलब अगर आपने 1 लिया तो 0.5 डिसोसिएट करेगा ना। वट एवर यू आर टेकिंग हाफ विल गेट डिसोसिएटेड, राइट। इज दिस क्लियर टिल हियर, यस और नो, प्लीज टेल मी, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। हाँ भाई बताएं, यस और नो, गाइस टेल मी, ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। So can Yes, you sir. बोलो, explain once again? अच्छा एक्सप्लेन once again now। वीक इलेक्ट्रोलाइट पता है सबको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, यस और नो। Have you heard this term strong electrolyte, weak electrolyte? Yeah. Okay. Strong electrolyte, what happens? For example, NaCl. If you take NaCl, if you take 1 mole of NaCl, like each and every molecule of NaCl will dissociate. But if you take AgCl, in AgCl, what will happen? If you take, let us suppose 100 molecules, 100 molecules maybe 90 will dissociate, 10 will not dissociate. So you will only get 90 Ag positive. You had 100 AgCl. So what was the potential? The potential was to get 100 Ag positive. But how much we are getting? Only 90 we are getting. Does this make sense now? Yes or no? Please tell me. Yes. Clear सबको? बोलो भाई. Is everyone clear? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, ठीक है. एक एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं. Please see. Let's suppose we have A2B3 type of electrolyte, which is weak electrolyte. ठीक है. और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है that is 50%, है ना, जो मतलब जितना भी आप लीजिए 50% डिसोसिएट कर जाएगा. Now originally if it's going to dissociate, equilibrium में रहता है, there is partial dissociation, then you will get 2A positive, 2A positive मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज होगा इसमें, प्लस you will get 3B negative. ये क्लियर है ना आपको? ये सब प्लीज टेल मी गाइस. दिस इज हाउ द डिसोसिएशन विल वर्क. समझ में आ रही है? Yeah. बताएं. ठीक है. लेट सपोज वी आर एट टाइम 0. ठीक है, वी आर एट टाइम 0 एंड वी हैव 200 molecules of A2B3. टाइम 0 में तो डिसोसिएशन कुछ नहीं हुआ है, ठीक है. आफ्टर टाइम, आफ्टर सर्टेन टाइम, तो लेट सपोज आफ्टर टी टाइम, है ना, तो टाइम कितना ट्रैवल हो चुका है? टी हो चुका है. नाउ
50% डिसोसिएट करेगा, 50% बच जाएगा, दैट मींस A2B3 that will be remaining is 100 डिसोसिएट करेगा एंड 100 रिमेनिंग हो जाएगा। ये सर ऑब्वियसली बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, समझ में आ रही है क्या बात? Out of the 200, 100 has been dissociated Yeah. and 100 Yes, sir. A2B3 is remaining. Make sense everyone? Yes or no? Please tell me. Mariam, Lohani, Sara, Taha. Yes, sir. Yes. Okay. That's Sunila. If one molecule of A2B3 dissociate, then how many A positive will we get? एक से कितना मिलता है हमको? If I have one molecule of the A2B3, then how many molecule of A positive? A positive कितना मिलेगा? देखो ना भाई, ये लिखा हुआ है यार, आंसर माइक ऑन करके आंसर करिए, इतना हार्ड सवाल नहीं है यार, आंसर नहीं करेंगे फिर हम नहीं समझाएंगे यार। इफ आई हैव वन मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल से कितना डिसोसिएट, अगर एक डिसोसिएट हो रहा है तो कितना ए पॉजिटिव मिल रहा है? हाउ मेनी ए पॉजिटिव आर वी गेटिंग इफ वन इज डिसोसिएटिंग? नहीं तो गाइस, वी हैव टू आंसर कर नहीं यार, किसी को अमरनाथ, आमना, मरियम, बतूल, सारा, प्लीज कीप योर माइक ऑन, ऑल ऑफ यू गाइस, माइक ऑन रखो, प्लीज कीप योर माइक ऑन गाइस। एक मॉलिक्यूल से कितना बन रहा है बताइए? इफ आई हैव वन मॉलिक्यूल देन हाउ मेनी ए पॉजिटिव? बोलो, सब बोलो, ऑल ऑफ यू गाइस। इफ वन A2B3 देन हाउ मेनी ए पॉजिटिव? Sir, 2. हाउ मेनी बी नेगेटिव? 3. ठीक है, अच्छा हम पूछते हैं। Now I have seen two molecules are dissociating. How many molecules are dissociating? How many molecules are dissociating? You said 2 molecules are Source. dissociating. हम बोल रहे if two molecules are dissociating. If So, how many molecules are dissociating? 4A plus and हाँ, 6 वही B अपन Right. पूछेंगे। 4A plus 6B plus, yes or no guys, tell me. Yes, sir. ठीक है। Now you have seen at times D it was 200. 100 dissociated, remaining is 100, है ना? 100 to dissociate किया because 50% dissociate कर जाता है. We have said that degree of dissociation is 50%. Fine. So 100 dissociated. If 100 has dissociated, how many A positive will be formed? How many A positive? So 1. If 100 have dissociated, अगर एक dissociate कर रहा है तो how many A positive? If one molecule is dissociating, how many A positive? Oh, 2. 2. So if 100 is dissociating, how many A positive? 200. 200. We will get Yeah. 200 A positive. And how many B negative will we get if 100 is dissociating? 300. 300. ठीक है, ये देखिए ध्यान रखिएगा, this 100 is not how much has dissociated, this is the remaining molecules, ठीक है ना? जो dissociate हो गया वो तो यहाँ पे आ चुका है, fine. Whatever 100 molecule dissociated ना, we 100 molecule dissociated and we got 200 A positive and 300 B negative, ठीक है, वो यहाँ पे। अब ना, looking at the initial value, मतलब इस initial value से how can we get this value of 100? बहुत आसान है, rather than 100 generally हम क्या लिख सकते हैं, whatever the concentration we have taken, that is we have taken 200 into the degree of dissociation कितना है आपके पास 0.5, तो basically क्या हो जाएगा, concentration into alpha. Generally speaking, alpha can change, concentration can also change, so generally speaking at time t how many molecules of the electrolyte will be present? C alpha. आया ना? बोलो भाई, सही है? या ना, C alpha. How can we write 200? I have just the initial value ना, यहाँ को ये पता है 200 पता है, and I know the concentration and degree of dissociation के हिसाब से we have to arrange. So 200 can be written as 2 into 100 into 2 into or rather 2 into 2 कहाँ से आ रहा है? ये A2B3 है ना, यहाँ से 2 आ रहा है into 200. ये 200 कहाँ से आ रहा है? This is the initial concentration 200 into the degree of dissociation 0.5. This will give us 200 ना, देखिए जरा
सही है, Yes, sir. देखिए, Yeah, yeah. सो इट इज बेसिकली 2 into C अल्फा, करेक्ट है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताइए, इसके लिए सीधा बताइए, 3 into 3 into 7, 5. C अल्फा। अब इन जनरल अगर हम बात करें, देखिएगा जरा, ठीक है ना, ध्यान दो। कुछ लिखा है हमने यहाँ पे भी, कुछ नहीं लिखा है ना, ठीक है, तो ये लिखिएगा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, समझ लिया आप लोगों ने, अब देखते जाइएगा समझ में आता जाएगा, ठीक है ना, डोंट हैव टू वरी टू। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, नंबर 1 डिसोसिएशन। देखिए डिसोसिएशन में तो हम इतना एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आप लोगों की खुद हिम्मत नहीं होगी एसोसिएशन में इतना समझने की, आप बोलिएगा सर फॉर्मूला बता दीजिए। ठीक है, डिसोसिएशन में समझ लीजिए एक बार क्या क्या चीजें हो रही, तब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा। लेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is equal to alpha, ठीक है, for we have a general molecule AXBY, AXBY, आपके पास क्या है AX and we are having BY, this will be in equilibrium with, अब देखिए हम I am writing है ना X into A पे जो चार्ज होता है that will be Y positive, कैसे सर, देखिए Al2O3 होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, डिसोसिएट की जगह तो एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होगा, we will get 2 एल्यूमिनियम, 2 यहाँ से आया, 3 पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है, देख रहे हैं 3 ऑक्सीजन है तो 3 पॉजिटिव आ रहा है, देख रहे हैं ना, प्लस Yeah, यू विल गेट 3 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा, ये 2 नेगेटिव, ये वैलेंसी से आता है थोड़ा थोड़ा अगर आपको याद हो, ठीक है ना, सो यू विल हैव वाई पॉजिटिव चार्ज पे आपको उतना फोकस नहीं करना, हमने समझा दिया, विल फोकस हियर एक्स ए है ना, ए का कैटायन है, दैट्स इट, फॉरगेट अबाउट द चार्ज, वाई बी एंड द चार्ज विल बी एक्स नेगेटिव, बी का एनायन है। अब प्लीज ध्यान से सुनिएगा, at time it is equal to 0, I have taken this concentration as C, this will be 0 and this also will be 0. There will be some change because there will be some dissociation taking place. Now what will happen? Some of the electrolytes, some of this AXBY, some of the AXBY will dissociate. So AXBY कम हो जाएगा, कितना कम होगा, minus C alpha. And this will be formed how much? X into C alpha. X, yeah. This will be formed how much? Y into C alpha. जैसे 2 into C alpha, 3 into C alpha था. This is the change by the way, ना ये इतना change हो रहा है. At equilibrium, that means after a large amount of time, बहुत देर के बाद क्या होगा? Initially we had C minus क्या बचा? C alpha. Here we have how much? X into C alpha. Here we have how much? Y into C. Initially तो 0 था. Right now we are having X alpha, तो X alpha बचा. Y into C alpha. ठीक है? अब ध्यान सुनिए, ध्यान से at equilibrium we are having these many ions, इतने ions है ना, after dissociation ये सारे ions बचे हैं, तो please write, see don't write, I is equal to number of particles after dissociation divided by number of particles before what, before dissociation होने से पहले, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन क्या है हमारे पास, आई इट इज इक्वल टू, हमारे पास है सी माइनस सी अल्फा प्लस एक्स सी अल्फा, ठीक है, प्लस वाई सी अल्फा, ठीक है, होल थिंग डिवाइडेड बाय, बिफोर डिसोसिएशन बिना, जब कुछ नहीं हुआ था तो सिर्फ सी था, हाँ या ना, Yeah. करेक्ट है गाइस, ठीक है, सो यू कैन सी दैट, अब देखिए सिर्फ देखते रहिए, सी का बहुत खेल है, यू हैव टू सी व्हाट्स हैपनिंग टू सी, you have to see what's happening to C. We have C in this particular case, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, you can take C common, when we take C common, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 minus alpha plus 1 minus alpha के बाद हमने ब्रैकेट बता दिया, ठीक है, 1 minus alpha plus what, plus x alpha plus what, plus y alpha divided by C and C will get cancelled. Now we will have I, it is equal to 1 minus alpha plus x alpha plus y alpha. ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, I, it is equal to 1 minus alpha, ठीक है, plus alpha को लिया कॉमन, x plus y, अब ध्यान से देखिए, I can write I, it is equal to 1 minus alpha plus alpha into n क्या हो गया, n को हमने बोल दिया, and it is equal to number of ions after dissociation, कैसे सर, कैसे डिसोसिएशन के बाद देखो, A2 B3 था,
तो 2 + 3 5 आयन मिलते, ax by है, तो ये x + y करेंगे तो नंबर ऑफ आयन्स मिल जाएगा ना, जैसे हम लोग NaCl के लिए करते हैं कि MgCl2 1 Mg 2 Cl x + y 3 नंबर ऑफ आयन्स आफ्टर डिसोसिएशन Yeah. x + y, है ना। ध्यान रखिए बहुत कुछ हो रहा है अभी। ओ माय गॉड। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर आपके पास 1, ठीक है, अल्फा कॉमन ले रहे हैं हम, ठीक है ना, अल्फा हम कॉमन ले रहे हैं, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, प्लस अल्फा कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, प्लस अल्फा आई एम टेकिंग कॉमन, इसको लिया हमने, तो क्या बचा यहाँ से, यहाँ पे बचा n, यहाँ पे क्या बचा -1, देखिए अल्फा इंटू एन प्लस एल प्लस अल्फा एन, अल्फा इंटू -1 माइनस अल्फा, ये चीज आ गई है, ठीक है। अब आपके पास और क्या कर सकते हैं, हाँ इसको इधर भेज सकते हैं, तो देखिएगा अल्फा इट इज इक्वल टू आई, 1 को उधर भेजा हमने, -1, यहाँ से n-1 को नीचे भेज दिया हमने, n-1, देखिए जरा समझ में आ रहा है आपको, तो नहीं तो हम एक स्टेप और लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लिख ही देते हैं, आप बिल्कुल हो चुके हैं पागल, देखिए 1 को इधर भेज दिया हमने, i-1 इट इज इक्वल टू अल्फा इंटू n-1, ठीक है, n-1 को पूरा, दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन विद अल्फा, सो आई विल सेंड इन दैट साइड, इट विल बिकम डिनोमिनेटर, second right, alpha it is equal to i-1 upon n-1, this is the formula that is going to be used, बाकी और कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, बीच वाला छोड़ दीजिएगा, बीच वाला तो एक स्टेप है बस, है ना, तो दिस फॉर्मूला i के लिए एंड दिस फॉर्मूला अल्फा के लिए यही यूज होने वाला है, ठीक है, बाकी जो राम कहानी है आप उसको लिख लीजिए प्लीज, ठीक है, बाकी जो हमने इतना आपको बताया है छाप लीजिए, क्या आपकी हिम्मत है, यू वांट टू डू द सेम एक्सरसाइज टू डिराइव द फार्मूला फॉर एसोसिएशन आल्सो, हाँ भी बोलेगा, हम नहीं कराएंगे किसी को, So can you like whatever see ना, the last end answer for the association, the final answer? ये तो लिखा है, एसोसिएशन का फाइनल तो लिखाएंगे ना, पूरे No, so डेरिवेशन you करने की asked. हिम्मत तो नहीं हो ना No, अभी। no, you were asking me. आई वाज आस्किंग यू, व्हाट वाज आई आस्किंग, No, sir, I thought you were asking whether you want. You were asking. No, you were asking us if you wanted to do the derivation for association on our own. Or I हाँ, thought that was. सो डू So यू वांट टू डू I was द asking if you could tell the final answer so we could make sure his part फाइनल, is right. फाइनल आंसर तो हम बताएंगे ही, आपको डेरिवेशन करना है क्या, Yes, sir. यू वांट टू डू द डेरिवेशन आल्सो, दिस होल थिंग फॉर यहाँ से यहाँ तक भी करना है आपको, और यू जस्ट वांट द मीट ऑफ द थिंग लाइक द क्रक्स, I just बॉक्स वाला want आइटम the चाहिए, final. पूरा Yeah. चाहिए, No, no, no. Only final. बॉक्स चाहिए ना, Yeah, yeah. हाँ कंप्लीटेड, कहाँ आपको समझ में आया, Yes, sir.
Just waiting for Mariam Batul. मरियम बतूल जल्दी लिखिए। Madiam Batul, are you, Madiam Batul, please let me know if you're not done. Next, for association. Madiam Batul, कुछ बोलिएगा तो समझ में आएगा। रेज हैंड, आप हाथ रेज कर रहे हैं, डाउन करते समझ आएगा। Write in the chat if you can't speak right now. For association. ठीक है, for association, degree of association होगा degree of association से कितना लेंगे हम? बीटा लेंगे। ठीक है, degree of association will be taken as बीटा। इसके लिए i जो होगा, i will be equal to 1 plus बीटा into 1 upon n minus 1। ठीक है, एंड बीटा की वैल्यू जो होगी दैट विल बी i minus 1 upon n minus 1। ठीक है, what is n here? Okay, Mariam Batul. But if you can hear me, then you can raise hand once you're done. You can tell, sir, I am here, and it is equal to what? Number of particles. Number of particles. Not after, before. Before association. Before association, ठीक है। तो डाइमर जो होगा, if you have a dimerization, तो डाइमर के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n will be equal to 2. If you have a trimer, it forms a trimer, it forms a dimer, इस तरह के वर्ड्स यूज होंगे। n will be equal to 3। ठीक है ना, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं इधर। कितना लिख लीजिए प्लीज। ठीक है, और एक चीज और लिखिएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट, अगर आपको कोई याद हो। डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज k। ठीक है, ये याद है किसी को कि नहीं याद है? के ए के बी है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? एसिड का बेस का है इन जनरल डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कि ए लिखते थे तो एसिड के लिए के बी लिखते थे तो बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट के। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये? के इट इज इक्वल टू C alpha square upon 1 is alpha. This is the dissociation constant for a weak electrolyte. ठीक है, इसमें और भी मतलब चीजें आ सकती हैं। When alpha is very smaller than 1, then क्या कर सकते हैं आप? यहाँ पे 1 माइनस अल्फा है, तो 1 में से अगर बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट रिमूव कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, दैट विल नॉट मेक एनी इफेक्ट। यू कैन राइट k it is equal to c alpha square सीधा। ठीक है, when alpha is very less than 1, it's very small। Raise your hand if you're done. Waiting for Mariam Batul, Mariam Lohani, and Sara. लिखिए, सवाल लिखिएगा।
19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड है ना, फ्लोरोएसिटिक एसिड होता है CH2F, फ्लोरोएसिटिक एसिड में क्या फ्लोरो डाल दीजिए, क्लोरीन डाल COOH, CH2F COH is dissolved in 500 gram of water. The delta TF is found to be 1 degree Celsius. ठीक है, calculate I and K for fluoroacetic acid. ठीक है, there are values that I'm going to give you guys. For example, KF दिया हुआ है आपको, KF is given as 1.86 Kelvin kg per mole. ठीक है, और आपको दिया हुआ है मोलर मास ऑफ सोल्यूट. The solute is fluoroacetic acid, that is equal to 78 grams per mole. And what else do we need? Do we need anything else here? No, we don't need anything else. ठीक है, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, डेल्टा TF is found to be 1 degree Celsius. So this is experimentally determined, है ना? And we have seen that I जो होता है हमारे पास, I क्या होता है? It is the experimental divided by calculated. अगर आपने को याद हो, एक्सपेरिमेंटल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय ना, द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. तो वहां से आपके पास क्या निकल जाएगा, विल गेट दी आई फ्रॉम देयर. कैसे आएगा वो हम बताते हैं. आप एक्सपेरिमेंटल तो आपके पास कितना है, 1 है, कैलकुलेटेड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. राइट, so let us do the calculation. What is the given data, उसको लिख लेते हैं. So we have WP that is equal to 19.5. We have WA that is equal to 500 grams. 500 grams. ठीक है, and what else do we have? We have the delta TF नहीं लेना है, delta TF आपके पास एक्सपेरिमेंटल है कहीं. We have to calculate the delta TF, that is calculated part. Then we have KF that is equal to 1.86. Then we have the molar mass of the solute that is equal to 78. Right? आपके पास जो delta TF निकल के है, calculate वाला ना, delta TF calculated, ignoring the any association dissociation, वो कुछ पता नहीं क्या होने वाला है. ठीक है ना, ignoring everything. जो हमारे पास प्योर कैलकुलेशन से आता है वो क्या था, KF into WB into 1000 divided by MB into WA. ठीक है, तो KF कितना है, 1.86 into WB it is equal to how much, 19.5 into 1000 divided by 78 molar mass into 500 grams. तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, है ना. And can we do any other calculations? 19.5 1.86. I am going to, देखिए यहाँ पे ना ये मत कीजिएगा प्लीज, डोंट डू एनी अप्रोक्सीमेशंस. ठीक है, अप्रोक्सीमेशंस कीजिएगा तो फिर मतलब ऐसे कोई दो कैलकुलेशंस यहाँ पे आराम से बिल्कुल बैठ के आपको पढ़ने वास्ते कैलकुलेट कीजिए. 1.86 into 19.5 into 2 is equal to 72.54. If I divide this by 78, I will get 0.92. ठीक है, आंसर आ जाएगा आपको 0.9. This is the T that is calculated. Now you will get I. I is equal to how much? Experiment T कितना था, 1, और calculate कितना है, 0.9. So 0.9. ठीक है, so that is the, sorry what? No, it's nothing. जी बताएं. Nothing. 1 divided by 0.90. That is the calculator. ठीक है, so this is the I, the value of after that we have got. ठीक है, if you calculate this, then this will come out to be 1.075. ठीक है, that's another thing. अब इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, can leave it in fact. Then they are asking K. K के लिए आपको निकालना पड़ेगा alpha, right? You will have to calculate the alpha. So what is alpha for dissociation? अच्छा, dissociation होगा कैसे पता चला? Because we have acetic acid. देखिए
अच्छा, एक और चीज से डिसोसिएशन पता चल जाएगा. This value here, I is what? It is greater than 1. If I is greater than 1, that means it is dissociation. है ना? 1 upon 0.93. Numerator is greater, denominator is smaller, the value will be more than 1. Alpha will be equal to I minus 1 upon n minus 1. I minus 1 कितना हो जाएगा? 1.075 minus 1 divided by n. The number of ions that you are getting after dissociation. So if you are having acetic acid, तो क्या मिलेगा? H plus with something. This will be 2 minus 1. जैसे acetic acid था ना, you had here na acetic acid, CH3COH. So instead of 3 hydrogens, we have 2 hydrogen and 1 chlorine. That's it. It's going to change, nothing else. I will be still, if you have acid and also carboxylic acid it will always going to be in association 2. Sorry, in dissociation वो 2 होगा हमेशा. This will be equal to 0.075 divided by 1. That is the alpha. But alpha नहीं पूछा है, क्या पूछा आपसे? K पूछा है. So K will be equal to how much? C alpha square. Why should C alpha square? Because आप देख रहे हैं कि 0.075 बहुत छोटा वैल्यू है ना. So 1 minus alpha कर सकते थे, but that's very small values. It's not going to bring a lot of change. That is why I have noted that I have taken the values C into alpha square. Right? So C into alpha square will be equal to how much? C into alpha square. C कितना है इसका भाई? C निकाला था क्या हम लोगों ने? We have not calculated the C ना. Concentration ऐसे नहीं निकाला हम लोगों ने. ठीक, concentration निकाल लेते हैं. Concentration will be equal to 19.5 जो कि आपका मोलर मास था. 19.5 divided by 19.5 is the given mass. Molar mass is 78. Huh? Molar mass is 78. ठीक है. 78 into how much volume? 500 grams, approximately 500 liters, to 0.5. And alpha square. Alpha it is equal to how much? 0.075 per square. So calculate कीजिए जरा. नाइनटीन पॉइंट फाइव 0.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का 1/2 कर सकते हैं. तो दिस विल बी 19.5 into 2 divided by 78 आएगा. ठीक है. 0.5 को ऐसे लिख दिया हमने. 19.5 upon 78 into 1/2. तो 2 ऊपर चला गया. एंड 19.5 का डबल कितना हो जाएगा बताइए? दिस विल बी स्टिल 0.075 पर स्क्वायर. 19.5 कितना हो जाएगा? 19 का डबल 39 हो जाएगा. 39 upon 78 into 0.075 per square. And this will be equal to 0.5, I guess, right? हाँ, देखते हैं. 0.5 होगा इंटू, इसको हम एक बार देख लेते हैं. 8 7 56 5625 and how many zeros? 1 2 3 6 होना चाहिए. 0 0.0 है ना. आंसर आएगा आपके पास 5 5 25 5 2 10 and 12 5 6 30 31 5 5 25 26 27 28. सही आंसर आ रहा है. कितना आ रहा है? 0.000. गलती है क्या? एक सेकंड देखो. 75 का स्क्वायर इज 5625 ओनली ना. 8 7 56 में इतना ही होगा. 8 7 56. This is 0.002815 0.00 281. into 0. हाँ, मतलब 0.00 आ जाएगा बस, है ना. आई हैव नॉट एडेड वो डेसिमल हमने नहीं किया था, इसके बस मल्टीप्लिकेशन देख रहा था. तो टोटल नंबर ऑफ ये विल बी हाउ मच? 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3
4, 5, 6, 7. This will be value. This will be equal to how much? We can write it as 2.81 into 10 to the power minus 3. -3. So this is the k. आपको कितना आ रहा है? How much are you getting? The same. On answer the same. Copy this down. अगर आपका पेपर हार्ड है तो इस पर सवाल आएंगे. That happens like with 1 or 2 sets sometimes. Raise your hand once you're done. Just waiting for Mariam Batul. Mariam Batul, just waiting for you. माइक थोड़ा ठीक करा लिया मरियम बतूल. ऐसे क्लास करने में अच्छा ही लिखता होगा, मजा ही नहीं आता होगा, कुछ आप आंसर नहीं कर पा रही. So that's it for today. Okay, we are going to meet on next Monday with a new chapter, that is electrochemistry. Chapter start. We'll get a lot of questions as homework. आपके पास time भी काफी. Hopefully most of you are having holidays by now. ठीक है, या फिर holiday start हो जाएगा आपका इस week के बाद. So please spend a lot of time in doing the homeworks and everything. ठीक है, last year है आपका school का. And like, believe me on this, भले ही आपको ऐसा लगता है कि मतलब मेहनत करना कभी खत्म नहीं होगा, but this year is the last time you have to do this amount of work. ठीक है, इतना amount of work will be never there. ठीक है, until unless you go to some field such as MBBS or something like that. If you're basically going to any other science field other than MBBS, then the workload will not be as you're having right now. मतलब कहीं workload, right? Whether you go to BTech, if you go to BSc or any other field other than MBBS, I don't really know what happens in MBBS. ठीक है, I'm कुछ नहीं पता. ठीक है, so I hope अच्छे से पढ़ रहे हैं डॉक्टर सब और इलाज ठीक से कर पाए. तो hopefully they are making a lot of stress, but मैं भी किसी फिर लेता के साथ. इस नंबर ना कहीं say something. Sir, I couldn't note down the degree of association. तो आपने हाथ रेस क्यों करके रखा था? Sir, I got disconnected. ये नहीं लिखा है और क्या नहीं लिखा है बताएं. So only the degree of association formulas. डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपने नहीं लिखा है.
degree of association is represented by beta. Maybe you guys can go. Bye bye. Take care. Assalamualaikum. स्कूल छुट्टी होगी अमरनाथ? Sir, so what? Are you having vacations now? School holidays? Yeah, yes, sir.